Let me discuss problem number 1.254. The particular problem is over rotational dynamics, and once again this is discussed in DPS 30. Just have a look at DPS 13, problem number 25, and you will find detailed, elaborate discussion over 1.254 based on rotational dynamics. Just have a look. Twenty-third problem. Let us start solving 23rd problem. A uniform cylinder of radius r and mass m can rotate about its stationary axis, horizontal axis passing through O, a thin cord of length L and mass m is wound on the cylinder in a single layer. Find angular acceleration of the cylinder as a function of length x. This is that length x that is hanging. The wound part of cord is supposed to have gravity on the cylinder axis. इस पर मास n की और L लेंथ की वूंड करी हुई। देखिए, सबसे पहले एंगुलर एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना। हम इस तरह से सिचुएशन को देखेंगे। एक सिलेंडर जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, जिसके चारों तरफ एक कॉर्ड इस तरह से वुंडेड है, और इसके इधर एक मास लटक रहा है। या जो लटकने वाला मास है m/l इंटू एक्स, और ये जो वुंडेड मास है m/l इंटू l माइनस एक्स। इस तरह से सिचुएशन को पहले देखिए, और अब कहिए कि यदि इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन अल्फा। हमसे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा ही पूछा है एज अ एक्स, और a इज इक्वल टू अल्फा आर। अब हम दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक तो यह वाला जिसमें हम कहेंगे m/l इंटू एक्स इंटू जी, और ऊपर टेंशन टी, और एक यह वाला जिसके इधर टेंशन टी है और यह अल्फा से रोटेट हो रहा। इसका mg और टेंशन इनसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस एक्सेस के अबाउट हम टॉर्क इक्वेशन बनाएंगे, और mg की वजह से टॉर्क जीरो होना है, शाफ्ट में जो भी कुछ फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क जीरो होना है। इसके इक्वेशन लिखते हैं m/l इंटू एक्स इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू ma, और इधर इक्वेशन लिखते हैं T इंटू आर
द टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की जगह डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। अब इन दोनों इक्वेशन को प्रॉपरली लिख लिया जाए, इधर m बाय एल इंटू एक्स इंटू जी माइनस सी इक्वल टू एम, अल्फा बाय आर लिख दो और अल्फा इंटू आर, सॉरी एक की जगह अल्फा आर, क्योंकि अल्फा ही मुझे निकालना है इसलिए ए को एलिमिनेट करना चाहिए, और इधर एक आर काट दिया जाए तो इधर दिखेगा मुझको T is equal to half m plus small m by L into L minus x into अल्फा। अब मैं यदि इसे ऐड कर दूं, इधर m बाय एल इंटू एक्स ही आएगा इंटू ए, m बाय एल इंटू एक्स, इधर गलती करी, m बाय एल इंटू एक्स इंटू ए, इधर भी यही m बाय एल इंटू एक्स इंटू अल्फा आ। अब ऐड कर देंगे तो t और t कैंसिल हो जाएगा और इधर देखने लगेगा m बाय एल एक्स इंटू जी इज इक्वल, इसे जब हम ऐड करेंगे तो अल्फा आर थ्रू आउट कॉमन दिख रहा है, m बाय टू प्लस m बाय एल इंटू एक्स, m बाय एल इंटू एक्स माइनस m into alpha r. So alpha comes out to be m dx upon L into capital M by 2 plus small m into r. This is angular acceleration alpha in terms of x. I hope everything is sound. आंसर में थोड़ा करेक्शन कर लो, उसमें टू द पावर माइनस वन है बस ब्रैकेट के। इसके बाद हम 8th प्रॉब्लम करेंगे।